trees. And now let us continue further, talk about another few types of trees. The next few type of trees I'm talking about is threaded binary search tree. What is threaded binary search tree? The threaded binary search tree is where ये क्या होता है, अगर आपने नोट किया होगा, जो आपका नॉर्मल बाइनरी सर्च ट्री होता है, जो आपका नॉर्मल बाइनरी सर्च ट्री होता है, यू टेक अप एनी ट्री, यू लेट्स से दैट यू कंसिडर दिस particular tree. In this particular tree, take a look at the diagram and you see that इसके 20 के लेफ्ट में क्या, इन दिस केस 20 के लेफ्ट में या राइट में क्या है, what is kept there, left pointer and right pointer, what is kept there, nulls obviously. 30 के राइट में there is null, 50 के लेफ्ट और राइट में there is a null, 70 लेफ्ट एंड राइट there is a null. So you find that ये जो null है वो क्या इंडिकेट करता है, null is simply indicating that, null is simply indicating that there is no node over there. Oh yes, there is no node over there, it is there and that is good, no doubt on that. लेकिन अगर ये बाइनरी सर्च ट्री है, आपको पता है बाइनरी सर्च ट्री में जब हम लोग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं तो हमें सॉर्टेड ऑर्डर में आउटपुट आता है. नाउ देर आर टाइम्स, देर आर केसेस कि जहां पर यू आर लाइकली टू लुक फॉर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल अगेन एंड अगेन. देर लाइकली चांसेस कि मुझको ये सॉर्टेड ऑर्डर में बार बार दिखाना है. मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, हमने जावा में ट्री सेट पढ़ा है. ए जावा के ट्री सेट में, वैसे उसका नाम ट्री सेट इसलिए है क्योंकि वो इंटरनली ट्री यूज करता है, और सेट इसलिए है क्योंकि वहां पर यूनिक एलिमेंट्स आर देयर. बट डू यू नो दैट इन ट्री सेट योर वैल्यूज आर स्टोर्ड इन ट्री सेट वैल्यूज आर स्टोर्ड इन सॉर्टेड ऑर्डर. एंड यू फाइंड दैट जब जब मैं ट्री सेट को ट्रैवर्स करता हूं, जब जब मैं ट्री सेट को ट्रैवर्स करता हूं, आई वांट टू गेट द आउटपुट इन अ सॉर्टेड ऑर्डर, आई वांट टू गेट द आउटपुट एज अ इन ऑर्डर. तो द पॉइंट आई वांट टू मेक इट ओवर हियर इज दैट, द पॉइंट आई वांट टू मेक इट ओवर हियर इज दैट आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बहुत बार जरूरत पड़ सकती है. तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल वी कैन ऑलवेज डू इट आइदर यूजिंग रिकर्शन or we can do the in order traversal by using stack. Is it possible? It's absolutely possible. But remember that recursion, मैंने आपको last time बताया था, recursion will slow down your process. Why recursion will slow down your process? क्योंकि हर बार आप लोग recursive call करोगे, function activation record need to be created onto the stack. Every time the recursion job is completed, the function activation record need to be destroyed. So obviously the recursion is going to make the things bit slower. You are aware. तो सर रिकर्शन नहीं यूज करते, स्टैक यूज करते हैं. इवन दो यू आर यूजिंग योर ओन स्टैक, फिर भी यू नीड सम टाइम फॉर पुशिंग एलिमेंट ऑन टू द स्टैक, you need some time for popping the element from the stack, and then I'm saying that it slow the execution and also it needs more space. मैं आपको बता रहा हूं टिपिकल इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिमिटेशन क्या. तो तो सर कोई तरीका है कि हम लोग इसका रिकर्शन या स्टैक अवॉइड कर सके? यस, तरीका है, और उसी को हम लोग कहते हैं थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री. व्हाट इट डज, थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री keep address of in order successor or predecessor addresses instead of null to speed up the in order traversal. And you are trying to use a simple loop, you are trying to use a simple loop instead of kind of a recursion. Have a look at this, you take a look at this polar diagram. In this polar diagram here you find that ये जो 20 है, मैं इन ऑर्डर सक्सेसर की बात कर रहा हूं. अब कल हमने डिलीशन पढ़ा है तो आपको सक्सेसर प्रीडिसेसर कंसेप्ट पता है. सो 20 का इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है, 20 का इन ऑर्डर सक्सेसर है 30. तो मैं कह रहा हूं कि 20 का लेफ्ट नल है, होने दो, 20 का लेफ्ट नल होने दो, लेकिन उसके राइट में जो नल है, नल के जगह पे यू कीप द एड्रेस ऑफ इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर. 40 की जगह पे 40 का लेफ्ट नल है, होने दो, बट 40 के राइट में you keep an address of its in order successor. On the similar line, 60's left is null, but right you keep the address of its in order successor. It is left is null, it is right, we keep the address of this, and then hundreds right we keep it null. 100 का लेफ्ट भी null है और 100 का right भी null है. Now you see, so what is the advantage? The advantage is that if you want to do the in order traversal, now your in order traversal is super simple. All you need to do is that start with 10, go to its right, it's 20,
Go to its right, it is 30. Go to its right, it is 40. Go to its right, it is 50. Go to again leftmost 60, and then go to its right, it is 70. Go to its right, it is 90, and then go to its right, it is 100. What I am trying to show you over here, यहाँ पर ना तो आपको रिकर्शन की जरूरत है, ना तो आपको कोई स्टैक यूज करने की जरूरत है. जस्ट बाय गोइंग टू द राइट 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 राइट, एक सीधा साधा लूप लगा के और कुछ बुलियन फ्लैग्स चेक करके आप लोग ट्रैवर्सल कर सकते हो, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर सकते हो. सो योर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल become super fast, and you get the output in a sorted order, obviously sorted in ascending order. सर मुझको sorted in descending order चाहिए तो then don't look for the successor, then think of predecessor. You think of the predecessor. So I'm saying that 100 के previous में you can keep the address, 100 के left में you keep the address of its predecessor, 80 के left में you keep the address of its predecessor, 60 के left में you keep the address of its predecessor. You continue further. 40 के लेफ्ट में you keep the address of its predecessor, 20 के लेफ्ट में you keep the address of its predecessor, finally 10 के लेफ्ट में you keep it null. And then what you are able to do, now you start from the rightmost, you start with rightmost, you print 100, 100's left, then 90's left, and then from 90's left you continue 60's left, sorry, not 60's left, 100, sorry, 100, you go to this, then you go to the leftmost, rightmost, you get 80, 80 is left, it is 70, फिर 70 is left, it is 60, 60 is left, it is 50, again come to the rightmost, you print 40, 40 is left, it is 30, and then you continue further with the similar line 20 and then 10. What you are achieving, you are achieving the descending sort, you are achieving the descending sort, and this is making your in order traversal very fast. अब ये वाला जो डायग्राम आप लोगों ने देखा, यहाँ पर हम लोगों ने जो राइट पॉइंटर्स थे, राइट पॉइंटर्स नल के जगह पे हमने उसके सक्सेसर के एड्रेस रखे. अगर हमने उसके सक्सेसर के एड्रेस रखे, दिस इज रेफर्ड एज राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री. दिस इज रेफर्ड एज राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री. और ये जो दूसरा डायग्राम है, जहां पर हमने लेफ्ट के अंदर उसके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर के एड्रेसेस रखे, दिस इज रेफर्ड एज लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री. And if you want, you can do the combination of both of them. You can do the combination of both of them, and you can say that it is left plus right threaded is called as in threaded binary search tree. तो सर थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री कहां पर यूज करते हैं? वो सिर्फ ऐसे जगह पे यूज करते हैं जहां पर आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बार बार करना है, और वो भी हाई स्पीड में करना है, बार बार करना है और हाई स्पीड में करना है. यू कॉल इट थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री. दैट इज अ सोल पर्पज. नाउ दिस काइंड ऑफ ट्री इज अ एप्लीकेशन स्पेसिफिक ट्री. तो किसी एप्लीकेशन में अगर आपको ऐसी जरूरत है, देन यू थिंक ऑफ इंप्लीमेंटेड थ्रेडेड बाइनरी ट्री. इज द थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री क्लियर? इज थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री क्लियर? द लॉजिक, ये क्या होता है, कैसे होता है, डेफिनेशन क्या होता है, करेक्ट. देन यू कंटिन्यू फर्दर. You continue further. There are some other simple trees are also available. Some simple trees are also available. You call it strictly binary tree. What is strictly binary tree? The strictly binary tree is said to be the binary tree in which each non-leaf node has exactly two child node. So मैं कह रहा हूं हर एक नोड को दो चाइल्ड होने कंपलसरी, या तो जीरो चाइल्ड या तो दो चाइल्ड. हैविंग वन चाइल्ड इज नॉट अलाउड. हैविंग वन चाइल्ड इज नॉट अलाउड. आप लोग डायग्राम देख सकते हो, एंड इट इज वेरी क्लियर. ए के दो चाइल्ड है, बी के दो चाइल्ड है, सी के दो चाइल्ड है, ई के दो चाइल्ड है, जी के दो चाइल्ड है, और बाकी जिनके चाइल्ड नहीं है उनके जीरो चाइल्ड है. दे आर ऑल लीफ नोड. तो जितने सारे नॉन लीफ नोड है, दे आर ऑल सेट टू बी स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री. तो उनका स्ट्रिक्ट रूल है. उनका स्ट्रिक्ट रूल क्या है? उनका स्ट्रिक्ट रूल क्या है? द रूल इज दैट या तो जीरो चाइल्ड या तो टू चाइल्ड, वन चाइल्ड इज नॉट अलाउड. तो यहां पर डी, एफ, एच, आई, जे, के, दीज आर लीफ नोड. आप इन लीफ नोड को छोड़ दो, बचे हुए सारे नॉन लीफ नोड को दो दो चाइल्ड है. इट्स कॉल्ड स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री. बट देन वी हैव गॉट वन मोर ट्री, we call it as a perfect binary tree.
what is perfect binary tree? The perfect binary tree is nothing but the binary tree which is full for the given height. For the given height, it is full, and then it contains the maximum possible number of nodes. It contains maximum possible number of nodes. अगर एक भी नोड आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, अगर एक भी नोड आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? हाइट चेंज हो जाएगा. तो मैं ये कह रहा हूं कि फॉर द गिवन हाइट जितने ज्यादा से ज्यादा नोड आप लोग ऐड कर सकते हो उतने हम लोग ऐड कर रहे हैं. एंड देन यू कंटिन्यू फर्दर. इसका हाइट चेक करो. इट इज 0, 1, 2, 3. And for this height, how many total number of nodes are there? How many total number of nodes are there? ये हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था. Yes, it is 15 nodes. So I'm saying that it is 2 raised to h plus 1 minus 1. ये फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था. And this tree, I'm saying that it is a perfect binary tree. Perfect binary tree मतलब फॉर द गिवन हाइट इससे ज्यादा नोड आप लोग लगा ही नहीं सकते हो. फॉर द गिवन हाइट इससे ज्यादा नोड आप लोग लगा ही नहीं सकते हो. परफेक्ट बाइनरी ट्री. Okay, good. In few books, I have seen that they are also calling it as a full tree. Up choice is yours. I'm continuing further. Continuing further, this is another one. The another one, there is something called as a complete binary tree. There's something called as a complete binary tree, or there's something called as a almost complete binary tree. So it is complete binary tree and almost complete binary tree. Read the definition. It is saying something like this. Read it carefully. A complete binary tree is a binary tree in which every level except possibly last level is completely filled and all nodes are as far left as possible. As far left as possible. So what exactly you are trying to say? I'm trying to say यहाँ पर जितने सारे आपके नोड्स हैं except the last node, except the last level, बचे हुए सारे levels they are completely filled. ये बचे हुए सारे levels they are completely filled. I hope you are able to see that in this particular case ये इस लेवल पे एक ही नोड हो सकता है. डन. इस लेवल पे दो ही हो सकते हैं. इस लेवल के ऊपर चार हो सकते हैं. एंड दे आर फुल, दे आर पैक्ड. ऊपर के तीनों लेवल में एक्स्ट्रा नोड ऐड करना पॉसिबल नहीं है. लेकिन जो लास्ट लेवल है, लास्ट लेवल के ऊपर आप लोगों को और नोड ऐड करने के चांसेस है. तो पॉसिबली द लास्ट वन, ये लास्ट वाला छोड़ के बचे हुए सारे लेवल्स के ऊपर नोड्स आर ऑलरेडी देयर. यू कॉल इट एज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. इन अदर वर्ड्स, आई वुड से दैट इसके जितने सारे लीफ नोड्स है, या तो लास्ट लेवल पे है या फिर सेकेंड लास्ट लेवल पे. प्लीज विजुअलाइज. जितने सारे लीफ नोड है, इन अदर वर्ड्स जितने सारे लीफ नोड्स है वो या तो लास्ट लेवल पे है या तो सेकेंड लास्ट लेवल पे. दैट्स इट. और समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जितने नोड लास्ट लेवल पे है, दे आर एज लेफ्ट एज पॉसिबल. सर नहीं समझा? डोंट वरी, मैं और डायग्राम ड्रॉ करता हूं एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. प्लीज पे अटेंशन. Let's say we have got something like this. Let's say this is, what happened? Just a minute. Something went wrong. Pay attention. Yeah, I hope the screen is visible. हाँ, A. So यहाँ पर एक नोड है, I'm going ahead. This is B, this is C. You continue further. This is D, this is E, this is F, this is G. Okay, have a look at this. H, I, J, K. Tell me
इज इट अ स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री? ये जो डायग्राम है, ये देख के कैन यू प्लीज टेल मी, इज इट अ स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री? यस, दिस इज अ स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री. दिस इज स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री. एंड सिंस इट स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, हर एक नोड के दो चाइल्ड है, सो ये इसको मैं स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री कह सकता हूं. इट स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री. बट is it a complete binary tree? I said this is not a complete binary tree. Why it is not a complete binary tree? Pay attention. Why it is not a complete binary tree? Because अभी इसके दो कंडीशन है. उसके सारे लीफ नोड या तो लास्ट लेवल पे या तो सेकेंड लास्ट लेवल पे होने चाहिए. या तो लास्ट लेवल पे या तो सेकेंड लास्ट लेवल पे होने चाहिए. आई एग्री, ये पहला वाला कंडीशन ट्रू है. ऑल लीफ नोड आर एट द लास्ट लेवल और द सेकेंड लास्ट लेवल. हाउएवर एक और कंडीशन है, जो लास्ट लेवल पे है दे शुड बी एज लेफ्ट एज पॉसिबल. एज लेफ्ट एज पॉसिबल, बीच में कोई एम्प्टी जगह नहीं छोड़नी चाहिए. बीच में कोई भी एम्प्टी जगह नहीं छोड़नी चाहिए. एंड सिंस कोई भी एम्प्टी जगह नहीं छोड़नी चाहिए, दैट इज द रीजन आई एम सेइंग, दैट इज द रीजन आई एम सेइंग दिस हैज टू बी लाइक दिस. नाउ व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? This is something. First of all, tell me, is it strictly binary tree? Is it strictly binary tree? Yes, this is still strictly binary tree. But is it complete binary tree also? Is it complete binary tree also? Yes, it is a complete binary tree also. It is complete binary tree also. But sir, ठीक है sir, complete binary tree समझ में आ गया. But what is almost complete binary tree? What is almost complete binary tree? Have a look at this. Pay attention. Almost complete binary tree is, you continue further. You continue further. Have a look at this. Now, can you please tell me, in this particular case, is it strict binary tree? Is it strict binary tree? No, this is not a strict binary tree. Is it complete binary tree? To be frank, it is not even a complete binary tree. Why is not complete binary tree? क्योंकि आपने यहां पर एक जगह छोड़ दिया है. अगर आपने यहां पर एक जगह छोड़ दिया है, ये जो लेफ्ट मोस्ट अलाइंड होता है, ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं है. एंड सिंस ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं है, आई विल नॉट इवन कॉल इट एज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. ये ना तो स्ट्रिक्ट है, सीट केयरफुली, ना तो वो स्ट्रिक्ट है, ना तो वो कंप्लीट है. ओके, लेट इट बी, लेट इट बी. आई एम जस्ट गोइंग वन मोर. ना तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है स्नेहा, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट भी नहीं है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट भी नहीं है. आई एम जस्ट गोइंग अहेड. Wait for a minute, and then let me show you one more. Show you one more. Tell me, is it a strict binary tree? Is it a strict binary tree? Sorry, this is not a strict binary tree. This is not a strict binary tree, not at all. Is it a kind of a complete binary tree? Is it a complete binary tree? Complete binary tree क्या होता है कि जहां पर जो लास्ट लेवल पे जितने एलिमेंट है, दे शुड बी अलाइंड as left as possible. They are to be aligned as left as possible. So please take a look at this. Is it complete binary tree? Yes, it look like it is quite complete binary tree. सिर्फ but ये strict नहीं है. लेकिन ये strict नहीं है. Such type of tree, listen carefully, such kind of tree is not called as a complete. इसको complete नहीं कहते, इसको कहते हैं it is almost complete. इसको कहते हैं almost complete. What is almost complete binary tree? The almost complete binary tree, which is like a complete binary tree, like a complete binary tree, लेकिन ये स्ट्रिक्ट होना जरूरी नहीं है. ये स्ट्रिक्ट होना जरूरी नहीं है. इसको हम लोग कहते हैं काइंड ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. एंड नाउ यू रीड इट ओवर हियर. ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री इज सिमिलर टू कंप्लीट बाइनरी ट्री. इट इज सिमिलर टू द कंप्लीट बाइनरी ट्री. मतलब इसके भी all elements are aligned as left as possible. Aligned as left as possible. However, it may not be a strictly binary tree. It may not be a strictly binary tree. वो strictly binary tree नहीं है. So I'm talking about this. Since वैसे ये complete है क्या? By definition of a complete, I can say that yes, ये complete भी है. ये complete भी है, but ये complete है लेकिन strict नहीं है. ये complete है लेकिन strict नहीं है. So I'm calling it as
almost complete binary tree. I'm calling almost complete binary tree. I hope you are able to see the example. ये एग्जाम्पल है जहां पर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट टू द लेफ्ट है, और लेकिन एट द सेम टाइम ये स्ट्रिक्ट भी है, एट द सेम टाइम इट स्ट्रिक्ट भी है। यहां पर भी ये कंप्लीट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट अलाइंड एज लेफ्ट एज पॉसिबल है, ये ठीक है। बट सिंस ये स्ट्रिक्ट नहीं है, इसको इसको लोग कहते हैं कि दिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। इज दिस क्लियर? अरे कंप्लीट और ऑलमोस्ट कंप्लीट का डिफरेंस कम क्लियर हो गया क्या? सो मैंने जानबूझ के एग्जांपल दिए। यू फाइंड दैट ये एग्जांपल, दिस एग्जांपल, दिस एग्जांपल इज नाइदर स्ट्रिक्ट, दिस एग्जांपल इज नाइदर कंप्लीट, दिस एग्जांपल इज नाइदर ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ये टर्म समझना बहुत जरूरी है, ये टर्म समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आता है तो आगे आपको हीप समझ में नहीं आएगा। तो सर क्या है? जस्ट टेल मी इन दिस पर्टिकुलर केस, टेल मी इन दिस पर्टिकुलर केस, ये कौन से टाइप का ट्री है? टेक अ लुक एट द डायग्राम एंड टेल मी which type of tree is this? Yes, this tree is almost complete binary tree. Yes, this tree is almost complete binary tree. Now listen, ये जो ट्री है, हम लोग ट्री यूजुअली कैसे बनाते हैं? ट्री हम लोग कैसे बनाते हैं? हम लोग करते एक नोड लेते हैं, उसके अंदर डेटा लिखते हैं, पॉइंटेड टू द लेफ्ट लेते हैं, पॉइंटेड टू द राइट लेते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, आई वॉन्ट टू गो अ स्टेप अहेड and I want to put this tree, I want to put this tree into the array representation. I want to put this tree into the array representation. Array मतलब मुझको ट्री लेफ्ट और राइट पॉइंटर से नहीं बनाना है, मुझको ट्री एरे से बनाना है, मुझको ट्री एरे से बनाना है। एरे के अपने एडवांटेजेस होते हैं। एरे का एडवांटेज होता है, एरे इज द फास्टेस्ट डेटा स्ट्रक्चर, यू ऑलरेडी नो। एरे का दूसरा एडवांटेज होता है, वो भी आपको पता है, कि एरे में एक्स्ट्रा ओवरहेड नहीं होते। तो मैं कह रहा हूं इस ट्री का मैं एरे रिप्रेजेंटेशन बना सकता हूं, और एरे रिप्रेजेंटेशन गोज समथिंग लाइक दिस। द एरे रिप्रेजेंटेशन goes something like this. Oh, you are able to see that? जानबूझ के for sake of to make the calculation simple, to make the calculation simple, मैंने एरे का इंडेक्सिंग 1 से चालू किया, मैंने एरे का इंडेक्सिंग 1 से चालू किया। एक बात बताओ, ये आपको ट्री लग रहा है या आपको एरे लग रहा है? ये ट्री लग रहा है, एरे लग रहा है? अरे वो एरे ही है, लगने की क्या बात है, वो एरे ही है। बट तो सर आप किस बेसिस के ऊपर कह रहे हो कि इट इज अ ट्री, इट इज अ एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्री? हमेशा याद रखना, ट्री किसके वजह से बनता है? ट्री बनता है क्योंकि यहां पर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। ट्री इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज गिविंग यू द पेरेंट चाइल्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप। आई होप यू एग्री। तो जहां जहां पर पेरेंट है, चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है, यू कैन ऑलवेज से दैट इट इज अ बाइनरी ट्री। तो मैं क्या कह रहा हूं, आई एम हैविंग अ एरे, लेकिन बाय लुकिंग एट दिस एरे, इफ आई कैन टेल यू कि देयर इज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, if I can tell you that there is a parent-child relationship, then you can even say that it is an array representation of a tree. I know that आपको bouncer जा रहा है. I'll give you some example. I'll give you some example. By looking at this array, see it carefully. By looking at this array, can you tell me who is a parent of H? By looking at this array, can you tell me who is the parent of H? I can tell you who is the parent of H. The parent of H, I'm saying that the parent of H is nothing but D. Trust me, parent of H is nothing but D. I'm saying that it is the parent of H. Oh, is it so? Yes. Not only that, who is the parent of I? Who is the parent of I? I would say that the parent of I is nothing but again D. Parent of I is nothing but again D. हाँ, मुझको पता है आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने जानबूझ के ऊपर का डायग्राम हाइड किया है। मैं आपको बता रहा हूं कि बाय विदाउट लुकिंग एट द ट्री, आप लोग सिर्फ एरे के ऊपर देख के बता सकते हो कि डी का लेफ्ट चाइल्ड है एच और डी का राइट चाइल्ड है आई। मैं बता सकता हूं, लाइक फॉर एग्जाम्पल, हु इज द पेरेंट ऑफ एफ? हु इज द पेरेंट ऑफ एफ? आई कैन से दैट द पेरेंट ऑफ एफ इज नथिंग बट सी। Parent of f is nothing but c. And if you want to see, so what is the parent of G? Oh, parent of G,
I can be very sure the parent of G is also C. A parent of G is also C. आप बोलोगे सर ये आप कैसे ढूंढ रहे हो? मैं आपको बता रहा हूं, मैं फॉर्मूला बताता हूं. टेक अ लुक एट द फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. द पेरेंट इज इक्वल टू चाइल्ड डिवाइडेड बाय 2. मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं. द पेरेंट इंडेक्स इज इक्वल टू चाइल्ड इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2. नाउ यू अंडरस्टूड दैट. मैं लॉजिक कहां से लगा रहा था? या फिर फॉर दैट सेक लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू parent into 2. Parent into 2. या फिर you continue further, you say right child is equal to parent into 2 plus 1. प्लस 1 जो अभी मैंने नीचे आपको दिखाया है. सर आप जो कह रहे हो सच कहां से है? ऊपर डायग्राम में चेक करो. नाउ यू सी दैट रेस्ट ऑफ द पार्ट. आई होप नाउ इट इज विजिबल. नाउ इट इज विजिबल एंड आई वाज ट्राइंग टू शो यू कि h का पेरेंट है d. आपको दिख रहा है? यस, h का पेरेंट है d. सी हैव अ लुक एट दिस. दिस इज 8, दिस इज 4. This is 9, this is 4. A 9 divided by 2, integer divided by integer gives you integer. With that formula 9 4. So I hope you understood that. Something similar, f का parent है c. This is 6 divided by 2, 7 divided by 2. It is there. Like you find that. So मुझको b के दोनों चाइल्ड ढूंढने हैं. आपको b के दोनों चाइल्ड ढूंढने हैं. इसका इंडेक्स क्या है? 2. A 2 into 2, a 2 into 2, this is nothing but the left child. 2 into 2, this is nothing but the left child. And 2 into 2 plus 1, this is nothing but the right child. This is nothing but the right child. अरे is the concept clear? अगर आपको लेफ्ट और राइट मिल रहा है तो कैन यू नाउ कॉल इट एज अ ट्री? अगर लेफ्ट और राइट अगर आपको मिल रहा है, कैन आई से दैट यस इट इज अ ट्री? यस इट इज अ ट्री. अब आप लोग जितने सारे आपने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, आपने जो भी एल्गोरिदम बनाए थे, वो सारे एल्गोरिदम आप इसके साथ इंप्लीमेंट कर सकते हो. ये अल्टीमेटली एल्गोरिथम रिमेन सेम. नो, आपको क्या करना है? यू वांट टू गो टू द लेफ्ट, यू वांट टू गो टू द राइट. दैट इज व्हाट ऑल यू नीड टू टेक केयर. तो आई एम सेइंग दैट you can very well go ahead and implement all those algorithms in order, pre order, post order, क्योंकि आपको लेफ्ट और राइट के फॉर्मूले पता है. rather not only that, नॉर्मल ट्री में गिवन अ चाइल्ड हम लोग पेरेंट के पास नहीं जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर गिवन अ चाइल्ड आई एम एबल टू गो टू द पेरेंट आल्सो जस्ट बाय सेइंग डिवाइड बाय 2. ये जो आप लोग देख रहे हो, दिस इज array implementation of almost complete binary tree, or array implementation of a complete binary tree. The array implementation of the complete binary tree is called as a heap. Is called as a heap. So what is heap? If you have a definition, if you don't know, this is in front of you. Heap is array implementation of a complete binary tree. और array implementation का मतलब क्या है? There is a formula. The parent-child relationship is maintained through the index calculations. So the parent index is nothing but the child index divided by 2. Remember, integer divided by integer gives you integer. And the left child index is parent index multiplied by 2. And right child index is parent index multiplied by 2 plus 1. And this is nothing but the heap. Hey, by the way, एक बात बताओ, is it a binary search tree? I said, am I calling it the binary search tree, or I'm calling only binary tree? I'm saying it is only binary tree. I'm not saying that it is binary search tree होना कोई जरूरी नहीं है. बाइनरी सर्च ट्री होना जरूरी नहीं है. ये बाइनरी सर्च ट्री मतलब लेफ्ट वाला स्मॉलर होना चाहिए, राइट वाला ग्रेटर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. एनी ट्री. इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर भी नहीं डाले, मैंने सीधा एबीसीडी डाल दिया. मैंने सीधा सीधा एबीसीडी डाल दिया. ओ दैट इज ग्रेट. दिस इज कॉल्ड एज ए हीप. व्हाट इज हीप? ए बाय द एक और वेरी इंपॉर्टेंट. सर हमने जावा में हीप पढ़ा है, सर हमने सी प्लस प्लस में हीप पढ़ा है. दैट हीप इज अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट. यहां पर वी आर लर्निंग हीप एज अ डेटा स्ट्रक्चर. इसका और उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. आई होप इट इज क्लियर. नहीं तो बाद में अचानक से किसी को तो याद आएगा, सर वो हमने जावा में मैनेज हीप पढ़ा था, तो सर आप गार्बेज कलेक्टर की बात कर रहे हो. बिल्कुल नहीं. दैट हीप इज अ मेमोरी एरिया. वो जावा का या सी का, सी प्लस प्लस का, इट इज अ मेमोरी एरिया. हेयर वी आर लर्निंग हीप एज अ डेटा स्ट्रक्चर. Heap as a data structure. Okay, that is great. Now,
यहाँ पर ग्रेटर स्मॉलर होने में कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन आई हैव गॉट सम एग्जांपल. टेक अ लुक एट दिस एग्जांपल. टेक अ लुक एट दिस एग्जांपल एंड चेक, डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप ओवर देयर? ये जो ट्री आपको दिख रहा है, इस ट्री में आपको कहीं पर कोई रिलेशन दिख रहा है? इज इट अ बाइनरी सर्च ट्री फर्स्ट? इज इट अ बाइनरी सर्च ट्री? आराम से देखो, असबरी. इज इट अ बाइनरी सर्च ट्री? नो वे, दिस इज नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर शायद कहीं ना कहीं पे तो आप लोगों ने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन दैट ए 30 के राइट में 35 के राइट में 30 है, और ये इवन 17 के राइट में 10 है. सो यू कैन नॉट से दैट इट इज अ बाइनरी सर्च ट्री. बाइनरी सर्च ट्री नहीं है. हाउएवर स्टिल यहाँ पर एक रिलेशन है. स्टिल यहाँ पर एक रिलेशन है. टेक मेक अ नोट. The parent node is greater than both of its child node. Check. The parent node is greater than both of its child nodes. Parent node is greater than both of its child node. Oh yes, आप लोग कोई भी नोड को चेक कर लो, parent is greater than both of its child node. Oh, that is fantastic. ये जो ट्री है, ये जो, अगर आप इसका एरे रिप्रेजेंटेशन करते हो, अगर इस ट्री का आप एरे रिप्रेजेंटेशन करते हो, इट इज कॉल्ड एज मैक्स हीप. मैक्स हीप इज अ हीप डेटा स्ट्रक्चर इन विच ईच नोड इज ग्रेटर देन बोथ ऑफ इट्स चाइल्ड नोड्स. इसको कहा जाएगा मैक्स हीप. एंड कैन यू प्लीज क्विकली टेल मी, डू यू सी एनी रिलेशनशिप इनटू दिस? Do you see any relationship into this? Do you see any relationship into this? Yes, absolutely. Here you find that each child, uh, each parent node is less than both of its child node. A parent node is less than both of its child node. What do you call it as? Obviously, here I will call it as, where I will call it as, this is mean heap. This is mean heap. What is mean heap? Mean heap is a data structure in which it is a heap data structure in which each node is smaller than both of its child nodes. Oh, that is fantastic. Mean heap is a heap data structure in which each node is smaller than both of its child node. Oh, that is fantastic. Then, तो सर ये मैक्स हीप, मीन हीप यूज कहां पर होता है? जनरल हीप ये कहीं पर यूज नहीं होते. जब यूज होते हैं या तो मैक्स हीप या मीन हीप यूज होते हैं. तो ये मैक्स हीप, मीन हीप कहां पर यूज होते हैं? द मैक्स हीप, मीन हीप, दे आर कॉमनली यूज टू इम्प्लीमेंट, यूज्ड टू इम्प्लीमेंट, शायद मैंने बताया था आपको इससे पहले. कैन समवन रिकॉल? दे आर यूज टू इम्प्लीमेंट, समवन रिकॉल दिस? नॉट? ओके. इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी क्यूज. प्रायोरिटी क्यूज, मैंने आपको बताया था प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट करने का सबसे एफिशिएंट तरीका है, यू कैन गो फॉर हीप. अगेन, इट इज नॉट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू, इट इज अ प्रायोरिटी क्यू. द वन which is having highest priority should come out first. One with the highest priority should come out first. And I'm saying that this is one application where heaps are commonly used. जो जावा का, जावा का जो प्रायोरिटी क्यू नाम का क्लास है, वो इंटरनली हीप इंप्लीमेंटेशन है. शायद मैंने आपको बताया था विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? इसका एन क्यू और डी क्यू, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? शायद मैंने बताया था वो भी आपको. मैंने जावा का प्रायोरिटी क्यू का डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके भी आपको दिखाया था कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है. इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है O ऑफ log n. A time complexity is O of log n. Oh, that is fantastic. Wait, wait. सर इसका और भी, क्या इसका और भी कहीं पर यूज होता है? यस, इसका और भी कहीं पर तो यूज होता है, और इसका यूज होता है टू इंप्लीमेंट समथिंग कॉल्ड एज अ हीप सॉर्ट. व्हाट आई सेड, इसका और भी कहीं पर तो यूज होता है, और इसका यूज होता है टू समथिंग